So, very good morning, children. Today we are learning class 10th science, chapter 6, life processes. So, पहले मैं बता दूं कि CBSE ने ऑलरेडी रिड्यूस सिलेबस जारी किया है, तो उसके अंदर ये जो लाइफ प्रोसेस है इसमें से कोई भी टॉपिक नहीं हटाया गया. So we learned one chapter of physics earlier and then एक natural resources का एक chapter या environmental science का एक chapter हमने किया था और उसमें से काफ़ी portions कट हो गया है. So that you can see in the syllabus, and this is a biology part, life processes, chapter 6. Okay, so let's directly go into the topic that we are learning. What is the life process? Yeah, what are life processes? Any process that is taking place inside your body, which is essential to maintain your life. The process essential to maintain your life is called life process. As for example, if I give you, the blood circulation, it is an important life process to maintain your life. Nutrition. So you take food, right, because you require energy, you require protein, you require vitamins, you require fat, you require a lot of things to build your body and to maintain your body and to walk and to talk and do work. So all these things you require, and this requirement is met by the food that you eat. So that is nutrition. So that is one of the life processes. So there are few life processes we are going to discuss in this chapter. So right away I'm going into the first life process, that is nutrition. So why nutrition? Why we require food? We require food. We know that the food contains carbohydrates, food contains fats, food contains minerals, vitamins, proteins, fiber, and all these things, and water even. So all these things are very essential for our body, to build our body, to make cells, and so that our internal organs will work, liver will work, heart will work, and our glands will work, and the brain will work. And we require energy to think, we require energy to see even, we require energy to walk, and talk and do work. So all these things, and energy giving food are carbohydrates, and bodybuilding food is protein, and most of the glands are maintained by different types of vitamins and minerals, and our bones require minerals. So a lot of things are there that we require, and we take it as food. So that is actually nutrition, intake of food. And there are different types of nutrition, and the first foremost type of nutrition is autotrophic nutrition. So what is autotrophic nutrition? And the second type is heterotrophic. So first let's see what is autotrophic nutrition. Auto itself means it is self-providing thing. अपना न्यूट्रिशन को खुद ही ढूंढते हैं या खुद ही बनाते हैं. So autotrophs, we know that it is plants mainly, क्योंकि ये अपना खाना जो है खुद बनाते हैं, है ना. अपनी जो ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो इनऑर्गेनिक थिंग्स से बनाते हैं. लेकिन जब आप हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जाते हैं तो हमारे लिए जो ऑर्गेनिक मटेरियल, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल जो नीडेड है, खास करके कार्बोहाइड्रेट्स जो नीडेड है, वो हम फूड से हमें डायरेक्ट मिलता है, मतलब वी टेक द ऑर्गेनिक फूड डायरेक्टली. बट हियर द प्लांट्स आर टेकिंग यूज ऑफ इनऑर्गेनिक थिंग्स. So whenever I teach the students, I say there are mainly two things in this world. Matter की बात करें, है ना,
और वैसे भी ये पूरा यूनिवर्स की बात करें, सो आई एम टॉकिंग समथिंग जनरल नाउ एंड नॉट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर पूरा यूनिवर्स की बात करें, देयर आर टू थिंग्स, वन इज मैटर एंड अनदर इज एनर्जी। पूरी दुनिया में जो भी दिखते हैं वो ये दो ही चीज है, मैटर और एनर्जी। और अगर आप मैटर की बात करें, अगेन देयर आर टू थिंग्स, देयर इज ऑर्गेनिक मैटर एंड इनऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर एंड इनऑर्गेनिक मैटर। और अगर मैं बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में अगर इसका बेसिक डिफरेंस बताऊं, ऑर्गेनिक मैटर जो है वो ऐसी मैटर है, वैसे थोड़ा केमिस्ट्री के हिसाब से बताया, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह की मॉलिक्यूल एटम्स इसमें प्रेजेंट होता है, और ये लाइफ को बनाने वाला मॉलिक्यूल्स होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या ऑर्गेनिक मैटर। और ये ऑर्गेनिक मैटर का खूबी है कि ये जल्दी डीके होता है या सड़ जाता है। लेकिन इनऑर्गेनिक मैटर जो है वो डीके नहीं होता, बिकॉज उसके अंदर कोई लाइफ नहीं है। लेकिन ऑर्गेनिक मैटर में एंजाइम्स एक्ट हो सकता है और वो डीके हो सकता है। दैट्स अ मेजर डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। और हमारा बॉडी जो है अधिकतर ऑर्गेनिक मैटर से बना हुआ है, क्योंकि हमारा एक प्लांट है, एक प्लांट के टुकड़ा को अगर आप काट के या उसके एक डाली को काट देंगे तो क्या होने लग जाता है, मुरझाने लग जाता है ना, वो फिर सड़ने लग जाता है। उसके पत्ती अगर आप हटा देंगे तो फिर वो सड़ने लग जाएंगे। लेकिन अगर आप एक बड़ा सा पत्थर है, उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा निकाल के रखेंगे, थोड़ी देर बाद देखेंगे तो वो पत्थर मुरझा हुआ नहीं मिलेगा आपको, या उसमें कोई डिसइंटीग्रेशन या डीकेइंग नहीं मिलेगा। लेकिन एक ऑर्गेनिक मैटर को अगर आप निकालेंगे तो वो डीके हो सकते हैं। इवन अगर आप टमाटर लाते हैं, पोटैटो लाते हैं, whatever it is, after few days it starts decaying because that is organic. So that's the main difference between organic and inorganic. और जो थियरी होती है कि इंसान जो है पहले एक अमीबा से बना, या अमीबा फिर एक इनऑर्गेनिक मैटर था, और इनऑर्गेनिक मैटर में कुछ एंजाइम्स एक्ट हुआ, फिर वो ऑर्गेनिक मैटर बन गया, है ना। सो दैट वाज थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में काफी सारी थियरीज है, उनमें से एक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक मैटर आपस में रिलेटेड है। यू कैन कन्वर्ट इनऑर्गेनिक इनटू ऑर्गेनिक एंड अगेन यू कैन कन्वर्ट ऑर्गेनिक इनटू इनऑर्गेनिक। ये जो फिजिकल एनवायरनमेंट में जो पाया जाता है वो अधिकतर इनऑर्गेनिक मैटर है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड इज इनऑर्गेनिक। कार्बन डाइऑक्साइड को एक डब्बे में रखेंगे, कुछ दिन बाद सड़ के बदबू आने लगेगा, ऐसे नहीं है। एंड अनदर इनऑर्गेनिक मैटर इज प्योर वाटर। अगर उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो उसमें से सड़ने का बदबू आएगी। लेकिन अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, प्योर वाटर की बात करें, वो सड़ेगा नहीं, बिकॉज H2O दैट इज इनऑर्गेनिक मैटर। लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन दोनों को मिला के हम ऑर्गेनिक मैटर बना सकते हैं। And that organic matter is glucose. And the famous process involved is photosynthesis. We already know it. The plants are actually mainly autotrophs, and they make their food, they make their carbon and energy meet by making carbohydrates. और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है या स्टार्च है, या इसका सबसे सिंपल फॉर्म बोल सकते हैं आप ग्लूकोज, और इसको बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, and the carbon dioxide plus water gives C6H12O6 which is the simplest glucose, है ना। और स्टार्च इससे भी हायर पावर्स होगा, C11 होगा, H24 होगा, whatever। और ऑक्सीजन, और ये जो प्रोसेस है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, दो इनऑर्गेनिक मटेरियल आपस में जुड़ के, जो नहीं सड़ने वाला मटेरियल आपस में जुड़ के एक ऑर्गेनिक मटेरियल बनता है, व्हाट इज ग्लूकोज। और उसके साथ में एक और इनऑर्गेनिक मटेरियल तो बनता है ऑक्सीजन, विच इज रिक्वायर्ड फॉर अस रेस्पिरेशन, है ना, सांस लेने में
और सांस लेते वक्त हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो हमारे बॉडी में जाते हैं और वो हमें एनर्जी बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट के साथ वापस ये सेम इसका रिवर्स प्रोसेस हमारे सेल्स में होंगे, और जिससे कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा ही बनेगा, वाटर भी बनेगा, लेकिन साथ में कुछ एनर्जी भी बनेगी। लेकिन अभी इस तरह इसको बनाने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा, लेकिन इसका रिवर्स प्रोसेस करेंगे तो आपको एनर्जी मिलेगा। सो इस इक्वेशन को हम प्रॉपरली लिखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन एंड प्लस some water is also formed. So I'm going to balance this equation because 6 carbon is here and I'm going to do it here 12. So you get here 12 water, 24, so here also 12, so 6 oxygen and 6 oxygen is here, 12 oxygen हो गया और यहाँ पे 6 O2 आएगा फिर। So this is the balanced equation now. So वैसे तो इक्वेशन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर है, लेकिन मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे एक ही कार्बन है, तो इसीलिए इसको 6 करने के लिए बगल में एक 6 डाल दिया और इसके बगल में 12 डाल दिया और इसकी बगल में भी दोनों में 6 डाल दिया, जिससे क्या है कि नंबर ऑफ एटम्स जो है वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड में सेम मिलेगा। नहीं तो आप गिन के देख सकते हैं कितनी हाइड्रोजन है, 24 हाइड्रोजन है, और इसमें भी अगर आप गिनेंगे 12, 6 2 12 प्लस 12 24 हाइड्रोजन। इसी तरह ऑक्सीजन और इसी तरह कार्बन भी आपको यहाँ पे गिनती में बिल्कुल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट साइड में बिल्कुल सेम मिलेगा। सो इसको हम ग्लूकोज बोलते हैं। सो दिस इज एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और यहाँ पे कोई कैटलिस्ट है और वो कैटलिस्ट है एक्चुअली क्लोरोफिल। So, and this presence of sunlight. So, in the presence of sunlight, what happens is, the green leaves of the plants contains chlorophyll, a pigment, green pigment called chlorophyll, and this chlorophyll get excited by absorbing energy from the sunlight. So there is a detailed explanation in higher classes 11 or 12, like NADPH2 molecule happen create होती है, a lot of things are there, but यहाँ पर आपको class 10th level में इसको direct learn 3 process से करना है। So there are 3 processes. The first process is absorption of light energy by chlorophyll. So absorption of energy by chlorophyll, that is the first process occurring here, and the second process is conversion of this light energy into chemical energy and splitting of water molecules into H2 and O2, hydrogen and oxygen. Okay, so conversion of light energy into chemical energy and splitting of water molecules into hydrogen and oxygen, that is the second steps happening. So that is a conversion of light energy into chemical energy. So light energy into chemical energy. So that is a second process which is happening. And the third process is, that's the main process, reducing, reduction of this carbon dioxide to carbohydrate. So reducing this carbon dioxide into carbohydrate, that is a third option. And this does not happen just a while. There are different processes. एक cycle occur होता है, उसकी भी एक detailed explanation अभी हम देंगे नहीं। So reduction of carbon dioxide into carbohydrate या glucose या starch whatever. तो सबसे simplest starch यहाँ पे दिया है, लेकिन कोई जरूरी नहीं ये बने, है ना। higher starch भी बन सकते हैं, C11 का भी बन सकता है ना। सो इससे भी कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो गिनती है वो बढ़ता जाएगा हायर स्टार्च में। ओके, सो दैट्स व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग दिस 3 स्टेप्स। लेकिन इसके लिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए। वाटर कहाँ से मिलेगा?
So we already learned in class 9 कि water is absorbed by the roots and transported to the leaves by the transportation system there. Xylem, phloem के बारे में सब आपने सीखा है और इस चैप्टर के एंड में भी हम उसके बारे में थोड़ा डील करेंगे. So now water is taken from the soil, है ना, not only water and minerals, क्योंकि हमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नहीं चाहिए, हमें प्रोटीन भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, है ना. सो प्लांट्स को प्रोटीन का भी जरूरत होती है, मिनरल्स का भी जरूरत होती है. सो दे टेक अप नाइट्रेट्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम द सॉइल, है ना, सोडियम, पोटेशियम. सो डिफरेंट एलिमेंट्स उनको जो चाहिए वो सब भी वो सॉइल में से लेते हैं और उससे फिर वो इसके अलावा ये प्रोटीन सिंथेसिस भी करते हैं, है ना. सो दोस थिंग्स आर डिफरेंट एनीवे, लेकिन नाउ वी आर जस्ट concentrating on what nutrition, and in this water is taken from the roots and along with other necessary things. And carbon dioxide, how does carbon dioxide reach the cells of the plants? Yeah, the green leaves. So green leaves में ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ब्रीच करते हैं, दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट. तो इसके लिए हमारे पास एक डिटेल एक्सप्लेनेशन है इन योर एनसीईआरटी अबाउट गार्ड सेल्स. सो ये लोअर एपिडर्मिस में, है ना, अपर एपिडर्मिस है और कुछ सेल्स वहां पे है, क्लोरोप्लास्ट वहां पे है, व्हाटएवर, है ना. और एक स्पोर सिस्टम है, एक छेद वाला सिस्टम है प्लांट्स में कि उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स की ग्रीन लीव्स या जहां पर कार्बोहाइड्रेट बेंड रहे, साइट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, वहां तक पहुंचने के लिए लीव्स के अंदर उसको जाने के लिए कुछ छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स होता है. So for intake of carbon dioxide, there is a stomatopore या stomatopores present on the leaves. So ये जो leaves में जो stomatopore present है उसके वजह से massive exchange of gases होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेना और ऑक्सीजन जो क्रिएट हो रहा है ना फोटोसिंथेसिस के जरिए, और उसको बाहर छोड़ना, और जो एक्स्ट्रा वाटर उनमें है और उसको भी बाहर छोड़ना, तो इन द फॉर्म ऑफ वेपर. तो दैट इज डन बाय द स्टोमाटोपोर प्रेजेंट ऑन द लीव्स. अब सवाल ये है कि जो स्टोमाटोपोर जो है अब ये हमेशा खुला ही रहेगा, तो इस स्पोर के अंदर से, इस छेद के अंदर से फिर जो भी इस प्लांट का वाटर कंटेंट है वो धीरे धीरे इवेपोरेट होने लग जाएगी और इसको हेवी वाटर लॉस हो जाएगा. तो ऐसा नहीं होने के लिए व्हेन नॉट रिक्वायर्ड, जब ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा होता है, तो इस प्लांट्स का खूबी है कि दे कैन स्टॉप, है ना, दे कैन शट द स्टोमाटोपोर, दे कैन क्लोज द स्टोमाटोपोर. सो स्टोमाटोपोर का ओपनिंग और क्लोजिंग, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न एज अ नेक्स्ट टॉपिक. सो स्टोमाटोपोर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग या intake of carbon dioxide, and the roots are responsible for the intake of water and other essential minerals. So that is how this nutrition is possible by autotrophs. They can do the photosynthesis and prepare food, and they store the food right after photosynthesis in the form of starch. इवन ह्यूमन बीइंग में भी आप जो खाना खाते हैं, अगर वो एक्स्ट्रा कुछ बच गया है जो अब्जॉर्ब होने के बाद आपकी बॉडी में काम नहीं आ रहा, तो उसको ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाती है. आपकी बॉडी भी फूड को स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन के रूप में, लेकिन प्लांट्स में तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वो स्टार्च के रूप में फूड को स्टोर करते हैं. सो ये जो स्टोमाटोपोर्स है वो सिर्फ लीव्स में नहीं होता, वो ऑन द सरफेस ऑफ स्टेम्स, ऑन द सरफेस ऑफ रूट्स, उसमें भी होता है. एक्सचेंज ऑफ गैसेस वहां पर भी रिक्वायर्ड है. सो लेट्स ड्रॉ ए स्टोमाटोपोर. सो 2 स्टोमाटोपोर बनाएंगे हम. सो एक्यूरेट डायग्राम जो है वो थोड़ा सा आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख लीजिएगा. सो
ये दो बड़े सेल हैं, इनको गार्ड सेल्स बोलेंगे, गार्ड सेल्स, चौकीदार वाले सेल है ना. सो दिस इज कॉल्ड स्टोमाटल पोर. So these things are actually chloroplast. और ये क्लोरोप्लास्ट क्या है, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आप क्लास 9 में सीख चुके हैं. सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दोस थिंग्स. अब ये गार्ड सेल्स टोमेटोपोर को बंद कैसे करते हैं, ओपन कैसे करते हैं, दैट्स आवर पॉइंट टू लर्न. ये गार्ड सेल्स जो है, इसके पड़ोस में भी खूब सारे सेल्स हैं. तो ये पड़ोसी सेल से क्या करेगा, वाटर को खींच लेगा. दे एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द neighboring cells and they swells up. So when they swells up, the pore becomes large. And then what about the stomatopore closed position? So in the closed position, what happens to the stomatopore is, it gives back the water content to the neighboring cells. So जो वाटर इन्होंने एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब किया वो अपनी नेबरिंग सेल्स को वापस दे देंगे, तो वो थोड़ा सिकुड़ जाएगा. दे श्रिंक. So when they shrink and the stomatopore get closed. So whenever the photosynthesis does not occur, so they close the stomatopore by withdrawing water, by giving away water to the neighboring cells. And when the photosynthesis happens and they require carbon dioxide, so they take water from the neighboring cells and they swells up so that the stomatopore opens. So the next topic that we'll be dealing is heterotrophic nutrition. But before that, I will tell you there are two activities 6.1 and 6.2 given in your textbook, which explains carbon dioxide is required for photosynthesis and water is required for photosynthesis. So water and carbon dioxide is required for photosynthesis, and even chlorophyll is required for photosynthesis, and sunlight is required for photosynthesis. So these all things so जो photosynthesis का requirement है उसके ऊपर दो एक्टिविटी है. So you read the activity and try to understand what is given there. क्योंकि एक्टिविटी को मैं यहाँ पे बोर्ड पे बताऊंगा तो आपको इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा. There are proper diagrams given और एक एक्सपेरिमेंट है वो. So तो एक्सपेरिमेंट वो करके देखेंगे, है ना. Even you can try to do that experiment. So when you do the experiment you will better understand कि लीफ, और ये छोटे क्लासेस में भी आपने सीखा है कि एक लीफ में क्लोरोफाइल अगर नहीं है तो उसमें कोई स्टार्च बन नहीं रहा, और जहाँ क्लोरोफाइल है वहाँ पे स्टार्च बनता है ना. और कार्बन डाइऑक्साइड अगर नहीं है तो उसमें स्टार्च नहीं होगी क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो फोटोसिंथेसिस होगा. तो इसके ऊपर भी वहाँ पे दो एक्टिविटीज गिवन है. ओके, सो लेट्स गो टू द next topic, that is heterotrophic nutrition. And heterotrophic nutrition is done by mostly animals and fungi. Autotrophic nutrition is done by plants and some bacteria, but heterotrophic nutrition is done by most of the animals and fungi. So the next topic is heterotrophic nutrition. और ये जो heterotrophic nutrition में अलग अलग animals है ना and some fungi, they use this heterotrophic nutrition. और ये मतलब ह्यूमन बीइंग्स को देखा जाए तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड को लेते हैं, और अगर आप एनिमल्स को देखेंगे वो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड को लेते हैं, लेकिन दे ऑल इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स ओनली. सो प्लांट्स आर द एक्चुअली द मेन प्रोड्यूसर्स जिससे हमें खाना प्राप्त होता है. सो even not only this large animals like human being or lion or cow and this और इस तरह के एनिमल्स के अलावा
बहुत छोटे छोटे एनिमल्स भी हैं, सिंगल सेल्ड एनिमल भी है जो, या सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म भी है जो इस तरह की हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। और उसकी एक एग्जाम्पल है ये अमीबा। और अमीबा का हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है कि एक फूड पार्टिकल उसके पास है, और ये फूड पार्टिकल जो है, दिस फूड पार्टिकल, and this food particle when the amoeba takes a food particle near it, so it has a nucleus, a single celled animal it is, so it produces a fake hand or fake foot जिसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया। सो इसका डायग्राम आपकी बुक में दे रखा है। सो सूडोपोडिया, सो जो पीडीएफ आपको भेजा गया और उसमें है, तो वो एक फॉल्स फीट को डेवलप करता है, और वो फॉल्स फीट धीरे धीरे उस फूड पार्टिकल को एनगल्फ कर लेते हैं और उसकी बॉडी में ले लेते हैं, और लास्ट में ये फूड जो है उसके साइटोप्लाज्म में, यानी उसका जो बॉडी फ्लूइड में बिल्कुल डिफ्यूज हो जाती है। एंड इन दिस वे अमीबा, which is a single celled animal, which is single celled organism, absorbs food. So there are different animals, like parasitic nutrition is there, and parasites are there. Some have live on blood of other animals, and some steals the food of other animals and kills other animals. So there are different types of nutrition. So these all things are you have already learned in smaller classes. But now let's go into nutrition in human beings. Especially the intake of food and what happens in the digestive system of human beings. That's what we are going to learn right now. So now the topic is nutrition in human beings. So there is a rough diagram that I have drawn here. ये आपकी टेक्स्ट बुक में है, और ये डायग्राम बनाना भी सीखना है आपको। तो हम इसका एक एक प्रोसेस को देखते हैं। वी नो दैट हम फूड डायरेक्ट माउथ में लेते हैं एंड इट इज च्यूड विद द हेल्प ऑफ आवर टंग एंड टीथ। तो उसको छोटे छोटे टुकड़े में, है ना, एक चपाती है तो उसको छोटे छोटे टुकड़े में करने के लिए हमारी माउथ मदद करते हैं। एंड ऑल्सो इट मिक्स इट विद ए सेक्रेशन फ्रॉम आवर ग्लैंड विच इज सैलिवरी ग्लैंड, और उसका जो सेक्रेशन है उसको सलाइवा बोलते हैं या थूक बोलते हैं। और वो जो सलाइवा है, इट कंटेन्स सम एंजाइम्स, स्पेशली सैलिवरी एमिलेज। सो ये सैलिवरी एमिलेज जो है, ये जो कॉम्प्लेक्स स्टार्च है उसको थोड़ा सिंपल स्टार्च में कन्वर्ट करने में मदद करते हैं। जो हमारा फूड पार्टिकल है या फूड है, उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स स्टार्च है उसको सिंपल स्टार्च में कन्वर्ट करने के लिए काम आते हैं। सो वी विल बी मेनली डीलिंग लाइक स्टार्च, फैट and protein. So this will be the three major things we'll be dealing throughout this nutrition digestion process. So then it get mixed with the salivary saliva, and the saliva contains salivary amylase which break down the complex starch into simpler starch, and then it goes into the food pipe, and the food pipe is called esophagus. So it is called oesophagus. Yeah, esophagus. So this the food goes into this food pipe, and it is not simply goes by gravity, लेकिन इसके अंदर कुछ स्फिंक्टर मसल्स है। ये जो इसकी जो वाल्स है, इस वाल में कुछ मसल्स है जो इसको पुश करते हैं। ऊपर से पुश करेंगे तो थोड़ा सा नीचे जाएगा, फिर पुश करेंगे, फिर नीचे जाएगा, फिर पुश करेंगे, नीचे जाएगा। एक पाइप आप लीजिए, एक फ्लेक्सिबल पाइप, उसके अंदर अगर आप कोई खाने का पार्टिकल डालेंगे, है ना, तो उसको आप एकदम से एक जगह से प्रेस करेंगे तो वो पार्टिकल थोड़ा सा आगे जाएगा, फिर प्रेस करेंगे, आगे जाएगा। सो दैट्स अ टाइप ऑफ मूवमेंट टेकिंग प्लेस इन योर esophagus, है ना। एलिमेंट्री कैनाल भी बोल सकते हैं आप, है ना, फ्रॉम द esophagus to the anus, alimentary canal में throughout this alimentary canal this movement happens which is called peristaltic movement. So ये peristaltic movement की वजह से इवन आप उल्टा भी खड़े होकर खाना खाएंगे, सॉलिड फूड खास करके, तो वो आपकी
पेट में जाएगा, है ना, लेकिन इट्स नॉट सो स्मूथ। जब आप नॉर्मल पोजीशन में खाएंगे तो इतना स्मूथ नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये स्फिंक्टर मसल्स का एक्शन वहां पर है, दैट्स व्हाट आई मीन, है ना। तो ये स्फिंक्टर उल्टा खड़े होकर खाने के लिए नहीं बोल रहा मैं आपको, ये एक स्फिंक्टर मसल का एक्शन जो है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है, उसको बताने के लिए मैं कह रहा हूँ। ओके, उसके बाद ये फूड जो है ये धीरे धीरे स्फिंक्टर मसल के एक्शन से ये पुश होके वो स्टमक में आता है। सो दिस स्टमक, और ये स्टमक का जो इनर लाइनिंग्स है, इट हैज ग्लैंड्स व्हिच प्रोड्यूसेस some juices. So in gases, in glands को हम बोलेंगे gastric glands. So ये स्टमक के अंदर gastric gland है जो एक सेक्रेशन को प्रोड्यूस करता है ना, एक रस जैसा, सलाइवा जैसा एक रस को प्रोड्यूस करते हैं, and that secretion has three main things. One is hydrochloric acid, HCl, and other is a enzyme called pepsin, and the third one is mucus. So what is the action of hydrochloric acid? The main thing is it's acid, so it acidifies the food, so that the pepsin, the enzyme, can easily act, because pepsin acts, is active, otherwise it is inactive. So pepsin is active in an acidic medium. So again, there are very deep explanation for this in class 11th and 12th, and I'm not going for that. That's not required for you here. And mucus is actually, it protects you from the action of hydrochloric acid. है ना, आपकी स्टोमक डाइजेस्ट ना हो जाए, है ना, आपकी स्टोमक खराब नहीं हो जाए, तो स्टोमक का जो इनर लाइनिंग्स है उसको एसिड के एक्शन से ये मुकस प्रोटेक्ट करते हैं। सो पेप्सिन जो है ये एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, सो इट डाइजेस्ट प्रोटीन। सो प्रोटीन, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन इज डाइजेस्टेड इन योर स्टोमक, एंड देन दिस food which is little bit digested now by the action of again sphincter muscles, and as sphincter muscles push the food little by little into this small intestine. But when they go into the small intestine, before they go into the small intestine, at the exit of this stomach, it get mixed by some secretions from liver, there's a gallbladder, and the gallbladder, there's a point where the bile juice is stored, and the bile duct releases this into the exit of the food from the stomach to the smaller intestine. So smaller intestine से फिर large intestine में जाते हैं. So stomach से small intestine से large intestine, है ना, और then it goes out. So उससे पहले जब ये stomach से small intestine में जाते हैं तो ये जो gall bladder है और ये pancreas है, and some secretions from pancreas and some secretion from the gall bladder, है ना, bile juice, the secretion from pancreas is pancreatic juice, get mixed with the food particle which is little bit digested now. और ये bile juice जो है ये क्या काम करते हैं? The main thing is now it is acidic. The food is now acidic. उसको alkaline बनाने के लिए bile juice काम आता है, क्योंकि एसिड और अल्कली जो है बिल्कुल दो डिफरेंट कैरेक्टर्स है जो आप केमिस्ट्री में सीखेंगे, और ये कई केमिकल रिएक्शन के लिए कोई एसिडिक मीडियम होना जरूरी है और कई केमिकल बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए अल्कलाइन मीडियम होना जरूरी है। सो यहाँ पर अल्कलाइन मीडियम चाहिए, जब इंटेस्टाइनल जूसेस उसमें एक्ट होंगे तो अल्कलाइन मीडियम का जरूरत है। सो बाइल जूस हेल्प्स इन मेकिंग द मीडियम अल्कलाइन, एंड ऑल्सो it emulsifies the fat, means it breaks down some larger globules of fat into smaller globules of fat, and larger particles of fat into smaller particles of fat. So it helps in the breaking down of fats, and also it helps in making the medium alkaline, acidic into
अल्कलाइन। सो पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको एसिडिक बना दिया था, अब ये जो बाइल जूस है उसको एल्कलाइन बनाएंगे। सो ये जो बाइल जूस जो है ये दो काम करते हैं। पहला काम है कि ये अल्कलाइन मीडियम बनाते हैं, और दूसरा काम है कि ये बड़ा बड़ा ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट का मॉलिक्यूल्स है उसको छोटा छोटा ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट का मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। सो लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स, एंड जिससे क्या होता है कि आगे का जो जितने भी एंजाइम्स है उसके ऊपर आराम से एक्ट हो सकते हैं। खास करके ये जो पैनक्रियाज है ये भी एक डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करता है, पैनक्रियाटिक जूस, जिसके अंदर ट्रिप्सिन और लिपेज करके कुछ एंजाइम्स है, और ट्रिप्सिन क्या करते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, है ना, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं, और लिपेज जो है ये जो एमल्सिफाइड फैट ग्लोब्यूल्स है, मतलब ये छोटा किया हुआ फैट ग्लोब्यूल्स है, बाइल सॉल्ट के द्वारा जो फैट छोटा हो गया उस फैट को, एमल्सिफाइड फैट को ब्रेक डाउन करता है लिपेज, which is contained in the, these two things are contained in the पैनक्रियाटिक जूस। सो पैनक्रियास एक ग्लैंड है जो आपकी स्टमक के बिल्कुल नीचे पैरेलल में पाए जाते हैं, एंड दो सो द लिवर का जो बाइल डक्ट है और पैनक्रियास का जो ग्लैंड है, और ये दोनों कुछ सेक्रेशन अपना इस इंटेस्टाइन की और स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर जाने वाला फूड पार्टिकल में डालते हैं, ताकि बाइल डक्ट इसलिए डालते हैं कि वो अल्कलाइन बन जाए, ताकि ये जो ट्रिप्सिन है प्रोटीन ब्रेक करने वाला जो एंजाइम है वो एक्टिव हो जाए, वो एक्ट कर सके उसको। सो और लिपेज और प्रोटीन्स ट्रिप्सिन वगैरह उसमें एक्ट कर सके, और ये जो लिपेज और ट्रिप्सिन है ये पैनक्रियाटिक जूस इसको सेक्रेट करते हैं। एंड नाउ दे हैव कम टू स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी उसकी वॉल्स भी कुछ जूसेस सेक्रेट करते हैं, एंड विच एक्चुअली ब्रेक डाउन द ऑलमोस्ट completely convert the protein into amino acids and carbohydrates into simple glucose and fats into glycerol and fatty acids. So glycerol, fatty acids, simple sugar and glucose and amino acids are the final products, final particles of this nutrition process. So, and these particles get absorbed on the walls of the small intestine, because small intestine, the walls are being provided with small finger-like projections which are called villi, and the villi is provided with a lot of blood spaces. So these sugar particles and fatty acids and glycerol and amino acids, which are actually the end products of this digestion, they get absorbed into the blood, and the rest of the things, rest of the fecal matter goes into the large intestine. But now water is also there, and this water get absorbed, reabsorbed in the walls of the large intestine. So large intestines absorbs the water, so your body decide how much water should be absorbed, and then it goes out through the anus, and there also the sphincter muscles helps the waste to go out of our body. So this is what the entire process of digestion which takes place in human beings. So you see very carefully there, in the refreshers that you learn, there will be a lot of explanation. Even I can do that explanation, but it is not necessary according to your syllabus. So that's all about today's class, and then we'll be learning about the other important life processes like respiration, circulation, excretion and all in this chapter.